Tell me what we have done now. First, on screen sharing screen. As default, The data visualization we have started. And very in the good. last, we have done that box plot. So that is very good. So we have done box plots in the morning. We did a lot, many code for section D. So let me start for this section C with some press. So I will try to finish these things in a less time. First, me go to this section file. Yeah, go on. तुम ये बोल क्यों रहा है? Have you straight away asked me ना? मैं तो बोला हूँ I never get disturbed by this. You can ask anytime. देखो, first of all, if you just type head iris, you see these 4 variables: sepal dot length, sepal dot width, petal length. तो ये 5 वेरिएबल है. तो इफ यू पुट अ डॉलर iris डॉलर, तो ये पांचों नेम आएगा. तुम बोल रहे हो तुम्हारे केस पे नहीं आ रहा. अरे यार, तो तुम कुछ पुराना वाला कोड रन करके रखा हुआ है जो तुम उसको हटाया नहीं है. जस्ट डू दिस rm ऑफ iris. फर्स्ट उसको रिमूव करो. डू दिस. मेरे पे वो नहीं रन हो रहा है, वार्निंग आ गया. तुम्हारा रन होगा बिकॉज यू हैव क्रिएटेड समथिंग एंड इट्स रन. जस्ट राइट दैट rm iris. रन हुआ. कहीं भी लिखो, ये कोड कहीं भी लिखो चलता है. दिस गिव्स सेम मीनिंग, सेम इंफॉर्मेशन. ओनली इफ you have written in the source window, you can save it. कंसोल वाला तुम सेव नहीं कर सकते. दैट इज द डिफरेंस. कंसोल पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं. नीचे लिखो rm iris. लिखा कि नहीं अभी तक? अरे कितना टाइम लगा रहे हो? अच्छा, रन हो गया. रन हो गया ना. फाइन. ये मेरे जैसा कुछ वार्निंग मैसेज आया? नहीं आया होगा. करेक्ट, करेक्ट. अब आइरिस टाइप करो, आ जाएगा. तो क्या हुआ है, इन द लास्ट टाइम सम टाइम वी हैव डन सम कोडिंग. मैंने बोला था कि ये दोनों को एक्सेस, सिर्फ ये दोनों को एक्सेस करो, ये तीनों कॉलम एक्सेस करो. एंड यू हैव जस्ट असाइंड दैट टू द आइरिस डेटा सेट. तो आइरिस डेटा सेट मेरा चेंज हो गया था. उसमें सिर्फ ये तीन कॉलम था. दैट इज इट्स नॉट एबल टू शो. ठीक है. सो दिस थिंग्स हैपन व्हेन यू डू नॉट ट्राई एनीथिंग आफ्टर दिस क्लास. दिस क्वेश्चंस व्हेन आई आस्किंग, दिस इज गुड. But the impression that I'm getting ultimately is you people are not at all worried about what is happening after the class. That is the indication anyway. Just take it as a lightly. I'm not at all worried about it. So whether you are learning it or not, doing it or not, it's up to you. चलो, so we have done till this point. So many plots. अच्छा, histogram किए थे, some box plot किए थे, then scatter plot. Very good. So all these plots that we have done. So now we have started with this class. This is for April. Just tell me something. All the plots that we have used or we have drawn. So what package we have used or what function we have used? Can you tell me what function we have used? Plot function. Okay, plot function हमने use किया था. Very good. So the plot functions we have used belong to base installation. What does that mean? Can you read ना? मेरा screen दिख रहा है ना? I am writing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. So this belongs to base installation. What does that mean? So we install R, it is there by default. Very good. So base, हम जब भी बात करते हैं base installation means it's in the
क्रैन आर जो हमने इंस्टॉल किया था, इन द क्रैन आर इंस्टॉल में ये है, we are not using anything from the external source. हमने कुछ external से call नहीं किया है. This is our understanding. But today we'll be learning, today we shall learn something जो कि हम external call से use करेंगे. तो we shall learn plotting again, plotting, or we shall learn this data visualization, you can say, but we shall use a function or use a package named ggplot2. So this is like, welcome to ggplot2. This is the most advanced plotting package worldwide available in R. इसका अभी तक कोई कंपटीटर नहीं है. पाइथन में C1 है, मैटप्लॉटलिब है. There are 2 modules in Python, but still it cannot compete with ggplot2. So the best plotting package you are going to learn today. ठीक है? Objective is set. Yes, sir. ठीक है. So you may be thinking ये नया word मैंने कुछ बोला package, ये क्या होता है? So let me tell you something what is a package. So package is something like it's a combination of some functionalities you can say that is just written and compiled to a repository, you can say. कुछ फंक्शन लिखा गया है और उसको एक कंबाइन करके एक बनाया गया है जिसपे हम उसको पैकेज बोलते हैं. तो when we use a package, we basically call the functions from the package. तो अब हम देखेंगे कि क्या ये पैकेज की बात कर रहे हैं, ये कैसा होता है. सो लेट अस सी. तो हमने पैकेज का नाम मैंने क्या बताया? ggplot2. वेरी गुड, दिस इज द पैकेज नेम. तो अब हमें ये पैकेज को लाना है कहीं से. दिस इज नॉट इन आर. जैसे कि ये कैसे पता चलेगा तुम्हारा आर इंस्टॉलेशन में है कि नहीं? हाउ टू know the package is there in base R or not. जैसे कि just type this library ggplot2. ये देखो मेरा ऑटोमेटिक ये आ रहा है. तुम लोग का ऐसे लाइब्रेरी टाइप करोगे ना, वो नहीं आएगा. Can you see if you plot, just type library ggp. In my case it is showing ggplot2, but in your case is that showing? No, sir. वो अपने आप नहीं दिखा रहा है. फाइन. तो इसका मतलब वो मेरे में इंस्टॉल है. यू डू नॉट हैव दैट इन योर इंस्टॉलेशन. कोई नहीं. तो अब हम सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल दैट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इंस्टॉल द पैकेज. चलो. सो द बेस्ट वे मैं बताऊंगा हाउ टू इंस्टॉल इट. देयर आर other different ways, but do not do it. Just write, there is a command, just type, just in inst type करो. install का जो spelling है ना inst है, just type करो. ये दिख रहा है install.packages दिखता होगा. Yes, sir. Yes, sir. चलो. ये तुम्हारा एक फंक्शन है which is a called utility function. इसलिए वो utils करके वो राइट में इसका नाम बता रहा है. तो इसको टैब मारो, जस्ट प्रेस टैब. ये फंक्शन आ गया, इंस्टॉल पैकेजेस. अब आई वांट टू इंस्टॉल द पैकेज. जो भी नाम है उसी नाम को हम इस पे दे देंगे. तो दिस इज हमारा ggplot2 है. तो इफ यू वांट टू इंस्टॉल समथिंग एल्स यू कैन आल्सो राइट दैट इनसाइड डबल कोट. ये याद रखो. सो ggplot2 मैंने जैसे लिखा हूं ऐसे लिख दो. अब नाउ यू डू कंट्रोल एंटर. मैं नहीं करूंगा, यू जस्ट डू इट. यहाँ पे देखो एक रेड वाला स्टॉप करके आता है, क्या मुझे बताओ? यस सर, कुछ एक हो रहा है इंस्टॉल डाउनलोड. ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा है और मतलब खुद सब हो रहा है. वेरी गुड. ये इन द राइट साइड यहाँ पे एक रेड बटन दिख रहा है स्टॉप करके. यस सर, यस सर. परफेक्ट. तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा वो स्टॉप हट जाएगा. सो जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट. तब तक तुम
जस्ट देखो कि क्या हो रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है. तो बेसिकली इट्स नाउ व्हाट डूइंग, इट्स डाउनलोडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जहां जहां भी वर्ल्ड वाइड है. यूएस का रेपोजिटरी है, ऑस्ट्रेलिया का है, तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से ये डाउनलोड करता है. राइट, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो 1-2 हो गया मिनट में हो सर। जाता यस सर हो गया. है. राइट, सो इट समटाइम डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड. अगर किसी का नहीं हुआ है, प्लीज डू नॉट वरी, इट विल, आई विल वेट फॉर यू 10-15 सेकंड. सर हमारा नहीं हुआ थोड़ा। चलेगा, कोई नहीं. वो स्टॉप सिंबल आ रहा है ना? यस सर, स्टॉप सिंबल आ रहा है अभी तक। चलेगा. तो इसका मतलब इट्स ट्राइंग, इट्स कनेक्टिंग. सो यू हैव जस्ट ट्राई टू क्रॉस चेक, इस पे कोई चीज गलत तो नहीं लिखा ना, स्वेलिंग वेलिंग कैपिटल ये सब कर दिया तो क्या होगा, ये भले ट्राई तो करेगा बट लास्ट को बोलेगा नहीं, दिस काइंड ऑफ पैकेज इज नॉट देयर. सो यू शुड बी राइटिंग द नेम्स वेरी वेरी like perfectly as it is there. Sir, in last, how can I know that that package successfully installed or not? वो स्टॉप साइन चला जाएगा एंड यहाँ पे ये कर्सर पे ये जो है ना, दिस आरो सिंबल विल कम. एनीथिंग दैट इज रन, ये आरो सिंबल फाइनली आ जाता है. Yes sir, I got that arrow. चलो डन. सो वी हैव, most of us have now installed this, but any function install करने के बाद just remember what kind of video software you are using these days. M player, VLC or media player, which one you are using वीडियो देखने के लिए? VLC. VLC. Okay, so maybe some of you might have installed VLC in your lifetime. तो जब भी तुमने ये बाहर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, एक चीज कभी मार्क किया है, वो सी डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट ये सब करता है, एक फोल्डर दिखाता है लाइब्रेरी करके. Excuse me sir. Yes sir. या गो ऑन. Sir, actually in the No, I cannot hear you, Piyush. Your voice was somewhere not coming clearly. अरे, what happened? अच्छा ठीक है. So if you have anything, you can write in the chat, Piyush. Although I don't look at chat, I'll take it. Okay, so what you are writing in the console section, it's showing error in install package, permission denied. I have no idea. You are running the system, you have opened Windows में कुछ ऐसा भी है क्या? The admin user, non admin ऐसा करके रखा है क्या लैपटॉप में? I hope you are running it using the laptop as admin, right? मतलब you are the sole owner of that, right? और कुछ एंटीवायरस ऐसा कुछ है जो अलाउ नहीं कर रहा है बाहर की चीजों इंस्टॉल करने के लिए. सो दिस इज प्योरली योर कंप्यूटर इशू related to either antivirus, which is switching off anything coming from outside, or you are not somehow logged in with respect to admin. Yeah, you should disable the antivirus and try, because I do not know the antivirus setting of different systems. Sir, in all our laptop antivirus is inbuilt, na, it's Windows 11. हाँ, तो डिसेबल अगर कर सकते हो देखो, but I do not know. This is simply all about like if you are installing anything. So this is for use. The problem is that only it's either related to antivirus or you do not have admin right. These are nothing to do with R. Chalo. So question was, when you install anything from outside, you might have noticed there is a folder called library. You might have, or even if you not, it's okay. तो क्या करता है, the file that is got from outside, it put inside a library folder. क्यों? Because it will have its individual component. तो ये library से call करेगा. When you click a video file, तो क्या करेगा, उस वीडियो का जो डेटा है, the data that is inside the video file, वो उसको रन कैसे करेगा?
it has to somewhere inside the VLC का program होगा जो उसको read कर पाएगा, because other software cannot read. So that VLC, since you have assigned this file to VLC, तो VLC ही उसको read करेगा. So when we have installed a package, the next immediate step is to call the library of that package. तो इसका मतलब क्या हुआ? We have installed this ggplot2. So immediately we'll call the library. How will call that? Library of, just see what I'm written. Library, just type करो, अपने आप आ जाएगा. Library. उसके बाद लिखूंगा मैं पैकेज का नेम. So पैकेज नेम हमारा क्या था? ggplot2. So now do not write it inside the code. Just write as it is, ggplot2. Press Ctrl Enter. Yeah, this is needed whenever you have installed a new package. This is needed. Or because otherwise you will not get any function out of that package. So this library command करता क्या है? Library command helps us to get all the functions inside the package, respective package. Any doubt till this point? Sir, after I typed that library ggplot2, it is showing some warning message. Yes, sir. Yes, What sir. is coming, sir? It's showing package ggplot2 was built under R version 4.1.3. Yes, Very sir. good. So you should many a times देखो ये पैकेज इंस्टॉल करने के टाइम कुछ वार्निंग देगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक इट्स ए वार्निंग इट्स ओके, क्योंकि वो एरर नहीं है. वार्निंग ऑन एरर, ऑब्वियसली द डिफरेंस इज एरर मतलब वो नहीं हुआ, द थिंग इज एब्सोल्युटली नॉट डन, कुछ करना पड़ेगा. बट वार्निंग में देखना पड़ेगा कि क्या वार्निंग है. नाउ दिस वार्निंग मैसेज इज कि वो बोल रहा है 4.1.3 में वो बनाया गया है. वही बोल रहा है ना, ggplot2 is Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू वर्जन. तुम्हारे जो वर्जन पीसी में है आर का वर्जन और इसका जो वर्जन है, मे बी इसमें कुछ अपडेटेड चीजें हैं और मे बी नहीं भी है. तो वो क्या है, बाय डिफॉल्ट एक मैसेज देता है 4.1.3. तो मेरा और इसमें दिखा नहीं रहा है है. सर ट्राई आर ग्राफिक बुक और ऐसा कुछ. नहीं वो कुछ जरूरत नहीं है. आर ये ग्राफिक्स ही है. तो आई विल टेल यू व्हाट इज दिस ggplot2. But वो warning is very much something which you can ignore because that is related to the version in which this ggplot2 is created. Fine. Okay, sir. Yes, sir. So why I'm telling all this thing to you? This ggplot2, what we are going to achieve using this? Sir, we will access the external sources. We can access. वो तो हो गया है, वो तो इंस्टॉल पैकेज करके हो गया. बट व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग? ggplot2 पैकेज क्यों किया? Plot different like charts and all. We can use different functions. Good. So basically we ultimately we want plot. So plotting के लिए ये हमने डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया. So basically we are learning how to download a package, how to install it and how to call it. But हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि we want to write code using this function. तो हमने आज तक जो लिखा था जस्ट प्लॉट लिख दिया हो जाता था. प्लॉट लिख दिया iris dollar separ length, तो it gave us a plot. बॉक्स प्लॉट कोड लिख दिया था लास्ट टाइम, iris dollar separ length, तो ये बॉक्स प्लॉट दे दिया. बट नाउ वी आर नो मोर यूजिंग दिस फंक्शन, क्योंकि देर आर मेनी एक्सीलेंट प्लॉटिंग वे using this ggplot. That was the reason I want to tell you, like at least tell you to learn this ggplot2. So how to do this plot? So before that, I just want to tell you, take 5 to 10 minutes, what is that ggplot2 and how to write a code using that ggplot2. So next 10 minutes is more important, focus on that. ये हम लास्ट पिछले सेक्शन में लिखा था, तो अभी आई विल रिपीट इट फॉर दिस सेक्शन. तो हमारा पैकेज नेम क्या था? ggplot2. ggplot2. राइट. सो द फंक्शन, द प्लॉटिंग फंक्शन जो है, फंक्शन इनसाइड दिस पैकेज इज कॉल्ड
ggplot, बस this is the function. ये 2 को हटा दो, this is the function that will be using. Now plot तो समझ में आ रहा है, ggplot plot, but ये gg क्या है? So remember this gg is for grammar of graphics. This is such a meaningful word, grammar of graphics. Graphics का मतलब anything related to plot. Grammar का मतलब, in this context, can you tell me what could be the meaning of grammar? So the basics. Basic rules. अच्छा, anything else? All are right, you are all right, but grammar in this context is जैसे कि तुम जब भी So language fundamental. very good. When you started speaking your mother tongue, you started learning quickly how you will be using different tense and all. So you learn the nitty-gritty of it. Everything you just learn inside that. So similarly, this plot ka anything, this graphics ka any type of things that we can do here, and this package is named accordingly with that thing. So this is ggplot2. Now we'll use the function ggplot to do our job. But how to use the function? The question next is, so हमारा objective ये है, we need plot. This is our objective, nothing else. Ultimately we need plot. So this ggplot का एक good thing है, this ggplot is designed to work layer on layer basis. इसका meaning क्या है? We'll see in 2 minutes. You will understand everything. Next 2 minutes. हम इस पे जब plot करेंगे, इसको क्या है ना, total plot is divided into small part. तो ये काफी अच्छा सा कंस्ट्रक्टिव वे में डिवाइड किया गया है, कंस्ट्रक्टिव वे में इसको डिवाइड किया गया है. जैसे कि now I want to call this function, so I'll write ggplot. This is my function. नाम start हो गया and मैंने ggplot function को कॉल किया. First tell me, ये लाइन याद रखना, हमारा ऑब्जेक्टिव है, we need plot. Now I'm started with writing a function. This function, obviously it needs some what? Any function needs what? Input. Data set. Perfect. It needs input. Now for this plotting, हमारा output है plot. For any plot, what is the first thing you should give? Axis. X-axis, Y-axis value. You should have a data. You should have a data first. हमारे ggplot में will need data first. हमने उसको डेटा दे दिया. यहाँ तक समझ गया सब? Yes, sir. हमने उसको डेटा दे दिया. Once you have given the data, what the next immediate thing we should give for a plot? Which plot we want? Yes, which plot, like Which kind pie of chart or Before Like- which plot? Can you still further tell me before which plot what you need? So we can write about on x-axis what we want and on y-axis what we want. Very good. This is the first thing you need for any plot. Plot बाद में देखा जाएगा, but x and y axis we need to define first. So we need x axis and y axis. This is our basic idea before the plot. हमने already ये ggplot data already लिख चुका है, उसको data तो दे दिया है. So we'll do that. Now we'll do that axis thing. So how to give this axis? Basically, all this information are coming under something called aesthetics, because you are mapping x data to y data. Is that correct? We are mapping x data to y data. Yes, sir. ये कोई रैंडम नहीं है, x में कुछ है, y में कुछ है, उसको बोलेंगे प्लॉट कर दो, नहीं होगा. That will map
y value to x value. So when you start mapping anything, you mapping matlab that will come under something called aesthetics. Aesthetics ऐसे तुम literally सोच सकते हो कि aesthetics का meaning ये होता है कि something beautiful, something designed, something that is aesthetics. तो similarly here हमारे ggplot language में हम बोलेंगे we want to map data of y to x. तो we will use something called aesthetic. तो now look at the code. यहाँ पे हमने लिखेंगे ggplot data input हो गया, next input is xy value. तो उसको कैसे करेंगे? थ्रू AES. AES is for aesthetics. AES is for aesthetics. तो उसको x वैल्यू दे देंगे, कॉमा एंड y वैल्यू दे देंगे, बस एस्थेटिक्स का काम हो गया. अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. हमने डेटा दिया, उसको बोला कि मेरा x में ये है, मेरा y में भी ये है. Now tell me what is next information we need. Next info for the plot. एक्स वाई दे दिया तो क्या हो गया? Which Sir, kind of Color, all that things. sir, colors and yeah. नहीं नहीं नहीं. Someone told which kind of plot. Who told that? सिमरन और कोई तो बोली शायद. yes, sir. Which kind of plot? This is first. इसके बाद तुम बोल सकते हो कॉलर देना है, ये करना है, that is different. So kind, what किस तरह plot? So can you tell me some example? Which kind of plot का मतलब क्या है? Give some name. So like bar graph or histogram. Box plot. Very good, good. So you all know this. Good. तो ये देखो, this we can think as a new layer. मैं तुमको ये बोला था, this plot, ggplot operates layer on layer. कहाँ लिखा था ये वाला. This work layer on layer basis. This is the easiest way to remember and easiest way to write a code. कैसे? हमारा डेटा दे दिया, xy वैल्यू दे दिया, खत्म. This is one layer. Now we want to say कि चलो I want some scatter plot, box plot. So this is a new layer. So how to write that here? मैं अगर इस कॉमा के अंदर लिखूंगा वो गलत हो जाएगा. यहाँ पे मैं अगर कॉमा देके लिख दूं, मान लो, तो how to I shall write here, suppose like this. Fine. मैं अगर यहाँ पे एक्स वाई लिखा था, या एस्थेटिक्स के अंदर कुछ कॉमा आमा करके या इस ब्रैकेट के अंदर लिख दूं, तो दिस विल बी नॉट ए ग्रेट वे टू राइट, बिकॉज दिस ggplot इज डिजाइन्ड इन सच ए ब्यूटीफुल वे. ये तुमको एक अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी देता है. तो आई वांट टू डिफाइन ए लेयर. मैंने कुछ इमीडिएटली क्या करूंगा, एक प्लस सिंबल दूंगा. प्लस सिंबल करके आई विल डिफाइन ए लेयर. आई वांट टू डिफाइन सम कॉलर, वो भी कर सकता हूँ. आई वांट टू डिफाइन समथिंग इन द एक्सिस, चेंज करूंगा समथिंग समथिंग, तो वो भी मैं कर सकता हूँ. जस्ट कीप ऑन एडिंग प्लस. तो यहाँ पे मैंने प्लस सिंबल दिया. एंड फॉर लेयर, this kind of plot, when you say kind of plot, this is also called geometry of plot. Yes or no? Which Yes, sir. kind of Yes, plot? sir. matlab, Yes, that is ultimately the geometry. We just want that geometry, nothing else. तो this geometry के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है R में. वो क्या करता है, geom अंडरस्कोर. ये है उसका फॉर्मेट. ये अंडरस्कोर के बाद काफी सारे हैं. तुम पॉइंट चाहिए, तुमको स्कैटर प्लॉट चाहिए, तुमको बॉक्स प्लॉट चाहिए तो जियोम बॉक्स प्लॉट, लाइन चाहिए तो जियोम अंडरस्कोर लाइन. तो ये सब अभी हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नाउ, इस पे कुछ आर्गुमेंट कुछ और भी दे सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अंडरस्टूड द फ्रेम, द वर्किंग स्टाइल ऑफ ggplot. कैसे कोड लिखा जाए वो तुमने क्लियरली अभी समझ लिया कि हमें पहले ऑब्वियसली डेटा, देन xy values, then whatever plot I need. अब with this knowledge we shall proceed, we shall write the code. Okay, fine.
Can I leave from this page now? Yes, sir. Chalo, so we shall switch to our thing. We are no more using this plot, previous type का, so we are using now box plot. अब मुझे बताओ, some question बताओ, which we want to plot. जैसे कि वो sepal length suppose था, वही suppose can we plot the distribution of sepal length? Is the question fine? Understood question? Yes, sir. Perfect. So sepal length का हम distribution plot करना चाहते हैं. Can you start telling me the code कैसे लिखा जाए? जैसे जैसे हम समझे थे अभी. ggplot. अब देखो GGP लिखा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर, यू डू नॉट नीड टू राइट ऑल. ggplot लिखा, जस्ट ब्रैकेट क्लोज, मतलब टैब लगाओ. फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इनपुट इज डेटा. डेटा इज इक्वल टू हमारा क्या है? Simple length. डेटा इक्वल टू क्या है? डेटा सेट. डेटा Iris. उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे. देन वी नीड टू गिव द एक्स वाई. Yes. करेक्ट. वी नीड टू एक्स वाई वैल्यू. AES तुम टाइप करते हो, इट्स ऑलवेज गुड टू रीड. जस्ट थोड़ा सा पढ़ लो कि ये AES क्या है. Aesthetic mappings describe how variable in the data are mapped. So it's good. Basically, you should take time on your own and you should read all this thing in the help file to improve your understanding. So this AES tab लगाया. अब हम X value देंगे. X में क्या आएगा? Now there is a problem. X में क्या आएगा? This is our plot जो था, but now I want to define this through XY. Iris. X में आएगा आइरिस. क्या आइरिस? बोलो. Iris dollar. Sepal length. ये X में आएगा. Are you sure? नहीं Just look सर, at वो plot. No sir, वो Y में आएगा sir. Right. ये आएगा Y. Correct. Observation आएगा X में. Very good. X में observation आएगा. Basically तो क्या है? Index. हाँ. जैसे आइरिस डेटा में ऐसे कुछ इंडेक्स है. अगर तुम टाइप करोगे आइरिस, ऐसा कुछ है इंडेक्स इसमें? इसमें तो 5 ही वेरिएबल है. ये सब डेटा है. बट what you are saying is correct. हमें x axis में something from 1 to 150 ये numbers चाहिए, right? Yes, sir. Yes sir. तो अब हमारा डेटा सेट पे तो नहीं है. हम चाहे तो आइरिस में कॉलम बना देंगे, 1 to 150 जोड़ देंगे. बट why not write simply 1 to 150? x में वही रहेगा. Yes, sir. परफेक्ट. तो ये हमारा x में आ गया. x y का काम हो गया. अब मुझे बताओ, तो पीपीटी के हिसाब से देखो, दिस पार्ट यू हैव डन, ggplot, डेटा एंड AES. नेक्स्ट पार्ट इज व्हिच ज्योमेट्री. उसको प्लस साइन करके लिखेंगे. तो प्लस व्हिच काइंड ऑफ ज्योमेट्री यू नीड हियर? So histogram. अरे हमने वही जो ये वाला प्लॉट Box plot. Box plot. नहीं सिंपल जो तुम्हारे Scatter सामने. diagram. Scatter diagram. करेक्ट. बट यू आर ऑल करेक्ट. हम यहाँ पे चाहे तो हिस्टोग्राम कर सकते थे बिकॉज दिस इज ए न्यूमेरिक वेरिएबल. यू आर ऑल्सो करेक्ट. हम बॉक्स प्लॉट भी करेंगे एंड ये स्कैटर प्लॉट. चलो ये तीनों प्लॉट करके देखेंगे. तो बट ये जो प्लॉट ऑलरेडी है उसी को हम ट्राई कर रहे हैं रेप्लिकेट करने के लिए, सो दैट यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट यू कैन वेरीफाई ओके आई हैव डन दिस. तो आई विल कॉल द स्कैटर प्लॉट. तो उसको कैसे कॉल करते हैं? नाउ सी, there is something called geom, like I have told. Just type geom underscore. There are all sort of functions, geometry, area plot, bar plot, this is box plot, geom box, this density plot. There is something called geom point. You'll see histogram line. Can you see here? This is geom point. Yes, sir.
अब इसके बगल में क्या लिखा है पढ़ लो एक बार. द पॉइंट geom इज यूज्ड टू क्रिएट स्कैटर प्लॉट, सो यू नीड दैट. तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, geom पॉइंट. ठीक है. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. तो हमारा कोड हो गया. मैंने जस्ट कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ. व्हाट डू यू सी इन द प्लॉट? Total 150 observations. प्रॉपरली जैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए था पेटल सेपल लेंथ का, वो आ गया, राइट? Yes, sir. बट एक वार्निंग मैसेज में कुछ बोल रहा है. कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? Sir, use Sir, yes. sepal length is discouraged. Sepal dot length. तो क्योंकि तो वो iris का मना कर रहा है। दे दिए हैं तो इसीलिए वो बोल रहा है सेपल डॉट लेंथ डायरेक्ट लेने के लिए और आयरिश डॉलर सेपल लेंथ लिखने का जरूरत नहीं. That is good. That is good. I'm happy from your answers. This iris already हमने यहाँ पे दे दिया. तो एक फंक्शन के अंदर ये डेटा फाइल का नाम दे दिया, मतलब इट हैज अंडरस्टूड व्हाट ऑल वेरिएबल इज देयर. तो ये उसमें से वो पिक कर लेगा. वी डू नॉट नीड टू गिव इट. तो ये मैं हटा दिया. सो नाउ दिस वार्निंग शुड नॉट कम. फाइन. Yes, sir. चलो नेक्स्ट इज कैन वी असाइन सम अदर कॉलर टू द पॉइंट्स. थोड़ा सा ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है. मे बी यू विल बी हैप्पी इफ आई कैन असाइन सम अदर कॉलर. तो ये कैसे किया जाए? ये जो geom पॉइंट है, दिस इज योर ज्योमेट्री. आर यू ऑल लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. फाइन. ये तुम्हारा ज्योमेट्री. इनसाइड दैट ज्योमेट्री आई विल चेंज. मैं बोलूंगा मुझे कॉलर जो है, कॉलर इज इक्वल टू रेड कर दो. मैंने रेड लिख दिया इसी के अंदर. कंट्रोल एंटर कर दिया. ऑल बिकम रेड. यहाँ पे वन गुड प्रैक्टिस रिमेंबर, जस्ट ए गुड प्रैक्टिस. ये जो प्लस साइन है ना, अगर तुम ऐसे लिखते जाओगे, दिस लाइन विल बी वेरी लेंथी. इट विल बी नॉट ए ग्रेट आइडिया टू जस्ट राइट दिस लेंथी लाइन एंड कुछ दिखना चाहो तो फिर इसको स्क्रॉल करो. डू नॉट डू दैट. प्रेस एंटर आफ्टर द प्लस साइन. रिमेंबर, ये प्लस से पिछले करोगे तो दैट विल बी रॉन्ग. वो रन नहीं होगा, फिर एरर मरेगा. जस्ट आफ्टर द प्लस साइन प्रेस एंटर. तो ये नीचे आ गया. नाउ यू कैन रीड इट. वेरी इजीली विजिबल. So can you do it once again? क्या तुमको तो सीधा दिख रहा है सामने प्लस Sir, साइन जहाँ actually, पे था. right. हाँ sir, कोई नहीं. वापस. तुमने जो लिखा है प्लस तक लिखो. ऊपर वाला कोड जो लिखा था 681 लाइन, उसी को ही लिखो पहले. मैं जस्ट उसको कॉपी किया था. उसको कॉपी करके प्लस तक जहां लिखा है, प्लस के बाद एंटर लगाओ. One okay. small doubt. या Sir, my all codes are running properly. Sir, just that from previous 6 to 7 codes, sir, after each code, it's showing a cross symbol. Okay, when I'm clicking those cross symbol, knowing for the fact why it is showing, it's saying that after every code you put a comma. And if I'm adding a comma after every code, then only the cross symbol is going. कॉमा मतलब किधर? इस पे कॉमा तो जरूरत नहीं होता है. आर में Yes. लाइन एंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन आर. जैसे सेमीकोलन Exactly. चाहिए सी में थोड़ा चाहिए. previous. तुम्हारा कहाँ से प्रॉब्लम हुआ? ये स्टार्टिंग में हो रहा है कि अभी हुआ कि किधर क्या हो रहा है? बोलो. नहीं सर, पहले रन कर रहा था सर. प्रीवियस क्लास दो कोड ऐसे हुए और आज का सारा कोड में क्रॉस हो रहा है. कोड रन कर रहे हैं, सिर्फ क्रॉस आ रहा है. इस जैसे 682 681 साइड में क्रॉस आ रहा है. फिर क्रॉस को क्लिक करने पे दिखा रहा है कि कोड की बात. अच्छा, तो मतलब वो एरर बोल रहे हो. 681 यहाँ पे रेड क्रॉस आ रहा है इसके लेफ्ट. यस सर, यस सर. मतलब वो समझ नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि वो एरर है. तुम एक काम करो, ये इधर कंसोल में ये यहाँ पे रख के 2 बार एस्केप लगाओ. ऐसे 2-3 बार एस्केप करो. समथिंग इज एक्टिवेटेड और वो उसी को लेके चल रहा है आगे. समथिंग इज यस सर, एक्टिवेटेड. एस्केप कर दिया.
वो क्रॉस तो होगा, क्रॉस नहीं जाएगा, बट आगे क्रॉस आ रहा है कि देखते हैं आप। Okay, sir. Okay, sir. So let us see this code now. Simran या someone is asking to do it फिर से करने के लिए. Is that fine, ma'am? You are asking something. Yes, sir. Yes, sir. It's fine. ठीक है, प्लस के बाद एंटर लगाओ, so that you see the code is now very good visible. No need to cross this length. तो जंप पॉइंट इसके अंदर हमने लिख दिया कॉलर इक्वल टू डेट. तो चेंज करना चाहोगे, मैं इसमें कुछ ऐसे लिख दूंगा कॉर्नफ्लावर ब्लू, कुछ हल्का सा ब्लू कलर है. तो कुछ और भी कलर जैसे जैसे तुम चाहो. आई वांट सम अदर कलर, लेट्स से one of my favorite color, dark green. This become dark green. कुछ डाउट नहीं आ रहा है, मैं कुछ कुछ करते जा रहा हूँ. समथिंग में बी कमिंग इन योर माइंड कि मैं कहाँ से ये सब नाम ला रहा हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तुम्हारे माइंड में? Yes, sir. How do you know about the ggplot? That was my question. How do I know this name? कि how do I know the ggplot? The name, sir. Color. How can we know these names? Correct. So you can type here colors. There is a function called colors. This is a graphic device. All things related to any color that is available वो तुमको बता देगा. यहाँ पे देखो वायलेट ग्रे से लेके और उसका सारे इंटेंसिटी लेवल, ग्रे 10, ग्रे 100, ग्रे 80, ग्रे 5. देन यहाँ पे देखो एक यहाँ पे डार्क ग्रीन, डार्क ग्रे, देन आइस ब्लू. There is also something, ये है तुम्हारा इधर मैंने जो कॉर्नफ्लावर ब्लू, कोरल, चॉकलेट, so everything are there. Now these are the colors available. You can just pick your favorite color. Tomato करके एक color है देखो, tomato 1, tomato मतलब this is just our tomato, उसी का ही color. So excellent thing, you can use these things to improve your graphs, to just visible अपील करने के लिए can use. Now next question, can we distinguish the points with respect to different species? ये हमने किया था ना लास्ट टाइम. Yes, sir. तो क्या किए थे उस टाइम? What was the solution basically? I'm not asking the code. What is the So we logic? have assigned different colors to different species. And we use the if else statement. Good. Yes. So basically assign colors to different species. तो अब वो if else वाला तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा फर्स्ट टाइम, और कुछ बड़े बड़े कोड लिखे थे. Now we will do it in a very easy way. See how we are going to do it. तो मैंने कॉपी कर रहा हूँ पिछले वाला लाइन. ये जो जंप पॉइंट के अंदर कॉलर लिखा था मैंने उसको हटा दिया. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. हमारे पास वी हैव गिवन डेटा, वी हैव गिवन xy वैल्यू. टिल दिस पॉइंट वी आर नॉट टचिंग बिकॉज दिस इज परफेक्ट. वी वांट इनसाइड द ज्योमेट्री every individual point should be related to what? Each individual point should be related to what? Arif, you want to distinguish? Different color. Should be related to species. Correct. The answer is species. The simple thing is each individual point, should be mapped to the respective species. Is that understood now? This line number 690. Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली वो होगा कैसे कि थ्रू रेस्पेक्टिव कॉलर्स, उसको हम कॉलर्स असाइन कर देंगे तो हो जाएगा. बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा है शुड बी मैप्ड टू द रेस्पेक्टिव स्पीसीज.
तो मुझे कॉलर असाइन करना है, तो हाउ मेनी कॉलर होगा उस पे बेसिकली? 3 कॉलर्स होंगे. And now my tricks must be to do something so that I can assign 3 कॉलर. देखो अगर एक मैंने ऐसे कुछ लिखूंगा कॉलर इज इक्वल टू स्पेसिस लिख दिया मान, तो नहीं समझेगा ये, क्योंकि स्पेसिस वाला कहीं स्पीसीज कहाँ से मिलेगा? स्पेसिस करके कॉलर नेम थोड़ी है कहीं, नहीं ना, राइट? No, sir. ठीक है, ये नहीं चलेगा. बट तो स्पीसीज जो डेटा है, ये लास्ट टाइम बताया था, जो स्पीसीज जो वेरिएबल है, दिस इज स्टोर्ड इन व्हिच फैशन? Categorical. Categorical data. कैटेगरिकल और फैक्टर. गुड. सो व्हेन यू टेल दिस प्रोग्राम कि भाई कॉलर करके स्पेसिस ले ले, तो स्पेसिस को कॉलर ले ले, तो इतना ये समझ जाएगा, इफ वी आर गिविंग इट प्रॉपरली, तो ये समझ जाएगा कि इसमें 3 कैटेगरी है, सो यू टेक 3 डिफरेंट थिंग. बट ये अभी क्यों नहीं समझ पा रहा है? द प्रॉब्लम इज, चलो आई एम कॉपिंग दैट नाउ इन द above कोड, द species color is not mapped. मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, each individual point should be mapped to the respective species. मैंने ऐसे कुछ यहाँ पे बताया ही नहीं. कहीं तो कुछ एक चीज याद है, मैंने कहीं तो बोला था मैपिंग के लिए तुम क्या यूज करोगे? पीपीटी में बोला था, when you are mapping something. AES. Excellent. Aesthetics. Excellent. Thank you for this quick response. So you are able to recall that. I'm happy actually. So AES mapping के लिए तुम यूज करोगे. तो अब I will, first of all, I'm trying to map the point here in this geom point only. तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉलर लिख रहा हूँ, I cannot directly write color. I'll map this color. कैसे? AES के थ्रू मैप कर दूंगा. AES color is equal to स्पेसिस लिख दूंगा. अब देखो, कंट्रोल एंटर. डन. मुझे अगर कोड समझ में नहीं आया, पूछो. फर्स्ट यू आस्क मी द कोड, देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग एल्स. एनीवेयर यू हैव डाउट इन दिस कोड, लाइन नंबर 6, 96 and 7. Ask me. No doubt. Shall we go ahead? Yes, sir. Yes. Looking at the plot, you can at least intuitively understand yourself, explain yourself or justify yourself कि देखो 3, ये जो right वाला चीज क्या है, ये जो species के नीचे ये बता रहा है, what is that called in a plot? So labels. Data label. नहीं, उसका नाम क्या है बोलो ठीक से. This is something you are learning from class 9, 10. Legends. Very good. This is legends. So this is many a times needed in the plot. Otherwise, you will not understand what is that. So if you want to do the same thing in our previous kind of plot, तो काफी कुछ कोड लिखना पड़ेगा. But this is so basically so smart and all. You can do this in small coding and it will give you all information. अब मुझे बताओ, अच्छा मैं ये कॉलर के जगह पे अगर स्पीसीज को ऐसे कोट कर देता, क्या होगा? इसको मैंने कोट बिठा दूंगा, डबल कोट में लिख दूंगा. डू यू नो व्हाट विल हैपन? ये रन नहीं होगा. क्या क्या पता है? इट इज नो मोर दैट कैटेगरिकल वेरिएबल. ये चला गया सीधा एनीथिंग पे चला गया. इट्स जस्ट एनीथिंग. अंडरस्टूड? तुमने अगर कोट लगा दिया, इट्स नाउ बिकम ए कैरेक्टर. इट्स नो मोर अ फैक्टर और कैटेगरी. सो रिमेंबर दिस, डू नॉट यूज दिस एरर.
Now come to next question. Can we see the distribution of sepal length versus क्या है? बोलो हाँ बोलो सर जो कॉलर आया है सर रेड ग्रीन और ब्लू मतलब जब हम कॉलर इक्वल्स टू स्पीसीज लिखे तो तब हम कोई और कलर चेंज कर सकते हैं वो तो ऑटोमेटिकली कलर दिया डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कैन वी चेंज द कलर टू सम अदर कलर हाँ सो फॉर दैट हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा एडवांस्ड कोड है फॉर द टाइम बिंग डू नॉट डू दैट आई विल टेल यू व्हेन द थिंग कम्स अच्छा तो इस क्लास पे नहीं होगा दैट आई यूज टू टेल इन द नेक्स्ट DAR क्लास इलेक्टिव में बट फॉर दैट हमें वो कोड कॉलर कोड डिफाइन करना पड़ेगा एक वेक्टर लेना पड़ेगा C करके 3 कॉलर एंड यू असाइन इट टू दैट देन यू कॉल दिस तब होगा कोई नहीं that can be done but for the time being do not let us learn the other thing which is more important that thing I'll tell you anytime when the time permits so now see can you see the distribution of sepal length versus koi variable batao petal width or anything so how to write the code now you can tell me the code on your own Tell me the code. First of all, what kind of plot we need? We need scatter plot. scatter plot Numeric value versus numeric value. Quickly, your answer must be scatter plot. First thing. तो आप कोड बताओ. ggplot, ggplot data iris, Data equal to iris. DES is x equal X. to Sepal sepal length. नहीं उल्टा करो हर बार ये जो this versus this बोलते हैं first thing is y second thing is x your petal width, Dot width. petal dot width y sepal dot sepal dot length मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक किया हूँ what is that mistake can you tell me knowingly I have done a mistake in the code p is your to capital P, x वो तो है that is capital P है Sir, after x space then is equal to and y space is equal to. that space that is actually मेरा एक habit है just to make the code better readable I used to give a space तुम नहीं भी दोगे चलेगा कहीं इधर भी दोगे तब भी चलेगा Sir, in petal width, so the W is, I guess, small. नहीं that is capital ये है this L is small but good that you are knowing ki what could be the issue so good thing is you have a hold on this data otherwise you cannot answer this kind of thing so first you have done that suppose tell me one thing I'll not write the geom thing सिर्फ इसी को ही रन करूंगा can you tell me what will happen this will just create the XY level और एक उसका प्लॉट एरिया एक सेट कर देगा उसके आगे कुछ नहीं बनेगा जस्ट सी दैट फाइन Yes, sir. Yes, sir. अब आगे कोड बोलो वी नीड अ स्कैटर प्लॉट तो जम Yes, geom underscore point. done so your scatter plot is done now you want to distinguish with respect to color you can tell me how to do that distinguish with respect to color code batao with respect to species geom point के अंदर तुरंत AES लगा दो mapping color is equal to species control enter done now it's easy कोई नहीं थोड़ा स्टार्टिंग डे 1 है कुछ लगता होगा बट यू विल एंजॉय दिस जस्ट
try to learn on your own, invest some time. The last one, let us try to see the distribution of sepal length with respect to different species through a box plot. Simple box plot करो, distribution of sepal length, nothing else. Box plot of sepal length. कैसे लिखें? ggplot data is equal to iris. बताओ. AES. equal हाँ बोलो. X is equal to sepal. अच्छा, x इक्वल टू sepal length कोई नहीं, प्लस geom अंडरस्कोर बॉक्स प्लॉट. मैं यहाँ पे एक्चुअली y लिख रहा था, इसलिए कि तुम लोग थोड़ा सा वर्टिकल बॉक्स प्लॉट के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए मैं y कर रहा था. इज दैट फाइन? बट x इज आल्सो फाइन. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, नो इशू. सर अगर x और y कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? मुझे क्यों लग रहा है बाय डिफॉल्ट शायद वो वर्टिकल वाला लेगा. एक बार चेक करते हैं. मुझे याद नहीं आ रहा है, बट शायद तो वर्टिकल लेगा. नहीं, बाय डिफॉल्ट तो x ले रहा है. फाइन. ये तुम्हारा हो गया एंटायर सेपल लेंथ जो 150 पॉइंट्स थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया बॉक्स प्लॉट. बट हमारा ये क्वेश्चन, दिस इज बिट मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंडिविजुअल स्पीसीज के साथ कैसा बन रहा है, वी वांट टू सी द बॉक्स प्लॉट. चलो कोड बताओ. ggplot डेटा इक्वल टू iris, AES, y पे लेते हैं, ठीक है, सादा और सेपल लेंथ. अब हमें बॉक्स प्लॉट चाहिए, जियोम बॉक्स प्लॉट. अब तुम देखो, जस्ट थिंक, एक मिनट सोचो. अरे वी आर एक्सीडिंग द टाइम, हाउ कम? नो 12:45. यहाँ पे एक मिनट सोचो एंड जस्ट ट्राई टू टेल मी व्हाट कुड बी द चेंज आई शुड, और व्हाट शुड आई डू इन द कोड सो दैट बेसिकली ये जो मीनिंग लाइन नंबर 715 है ना, उस पे एक्स एक्सिस में क्या होगा? ऑब्जर्वेशंस. नील डाउन हो जाओ. सर मेरा एक डाउट है सर. तुमने सर ये डाउट, तेरा 10 सेकंड तुमने वेस्ट. ना सर, सॉरी सर. सर एक्चुअली सर मैं कुछ एक क्लिक कर दी सर, मुझे खाली सर सेकंड दो मतलब साइड का जो मतलब विंडोज दिखा रहा है, ये जो जहाँ पे सर हम कंसोल में लिखते हैं वो नहीं दिखा रहा है सर. वो कैसे आएगा सर? कंसोल वाला मतलब ये नीचे वाला, ये दोनों सर, ये सर ये दो ये दोनों ही नहीं दिख रहा है. सिर्फ नो ये सर, ओनली राइट ये सर. तुम ये लाइन कहीं दिख रहा है? ये जो कर्सर है ना, ये लाइन तुम्हारा पूरा इधर आ गया क्या? कहीं ऐसा आ हाँ गया? सर, या ये सर ऐसे आ गया, पूरा आ गया. तो जो कर्सर है ना, थोड़ा सा लेफ्ट के पास रोटेट करते रहो. इधर थोड़ा थोड़ा ऐसे करो, ये वाला सिंबल आएगा, ये जो 4 सिंबल आएगा तो उसको ड्रैग कर लो. ओके सर. थोड़ा सा उसके आसपास कुछ ऐसे मूव करो, वो वाला, वो चारों वाला सिंबल आएगा, तब पता चलेगा कि वहां पे एक लाइन है. सर नहीं आ रहा है, खाली कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली ग्राफ पूरा बड़ा सा दिख रहा है सर. तो फिर ये तुम्हारा कैसे बन गया? नहीं, तुम्हारा विंडो तो डेफिनेटली है, मतलब ये ऐसा हो गया है, पूरा मिक्स हो गया है. यस सर, यस सर. अगर मेरा ऐसे हुआ, मान लो ये देखो, मैं जैसे कर्सर को ये लेफ्ट पे लाता हूँ ना, ये सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे. तो जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे क्लिक करो, सिलेक्ट करो उसको, ये सिलेक्ट करके ड्रैग करो.
सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या, थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए? इसमें स्क्रीन से ठीक है, करो स्क्रीन से। आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट एंड आई एम अलाउइंग स्क्रीन शेयर। फाइन, देखते हैं। सर कैन यू सी? हाँ, तो तुम इधर ये करो ना। हाँ, अच्छा, वहीं पे ड्रैग, राइट। सर नहीं दिखा रहा है कुछ भी। अलीबा, उसको मिनिमाइज करो। इसको? हाँ, एक बार वहां पे नहीं, क्लिक करते हो तो नीचे उसको चला नहीं, जाएगा। उसको नहीं, उसको साइड वाले को। नीचे आ जाओ, नीचे। हाँ, तो बट वो तो वही हो गया। ये राइट में वो सिंबल दिखना चाहिए जैसे तुम कर रहे थे। सिंबल लाइट पे क्यों नहीं आ रहा है? तो मेरा भी एग्जैक्टली वही है एंड मेरा वो दिख रहा है तुम्हारा। मूव करो फिर से, कर्सर मूव करो, देखते हैं वो धीरे स्लो। नहीं, नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर एक काम करो। तुम एक यहाँ पे एक सिंबल, तुमको जो एडिन लिखा है ना, एडिन, या एडिन के पिछले एक 4 रेक्टेंगल का सिंबल, कैन यू सी दैट? हाँ हाँ, वो कर्सर लेफ्ट पे, हाँ वहीं पे, लेफ्ट पे, वहां पे क्लिक करो एक बार। वो 4, हाँ, उस पे क्या क्या तुम्हारा एक्टिव। अच्छा, इधर करो, शो ऑल पेन, सिलेक्ट करो शो ऑल पेन। ओह यस सर, यस। चलो, तो कैन यू स्टॉप शेयर? थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, सो लेट मी शेयर देन। तो मेरे लिए तो ये ऐसा है, ठीक है, डन। तो नाउ क्वेश्चन ये था, लेट अस ट्राई टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेपल लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्पीसीज। तो तुम ये स्पीसीज और व्हाटएवर द एक्स एक्सिस में क्या होना चाहिए? सर स्पीसीज। एक्स एक्सिस में स्पीसीज होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या होना चाहिए? सेपल लेंथ। अच्छा, गुड। तो किस तरह प्लॉट, प्लॉट में किस तरह दिखना चाहिए? व्हाट शुड बी, वी शुड सी इन द प्लॉट? तीन ठो अलग अलग बॉक्स प्लॉट दिखना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। Because we have 3 species. X is equal to species, Y equal to sepal length, geom box plot. अगर मैं ऐसे करूं, so I should see 3 different box plot. यस सर। यस सर। And all of you remember, this is one of the most useful plot for analytics professionals. Because क्या होता है ना, कोई भी डेटा में तुम्हारा कैटेगरिकल वेरिएबल काफी रहते हैं एंड यू वांट टू सी विथ रेस्पेक्ट टू, सपोज एक सिंपल डेटा सेट है जिसपे सैलरी दिया हुआ है एंड फॉर मेन वीमेन करके ऐसे दिया हुआ है। यू वांट टू कंपेयर व्हाट इज द वीमेन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन कितने हैं, इज दैट मोर देन मेन, और द मीडियन सैलरी ऑफ वीमेन इज लेस देन मेन, और द distribution of salary towards the higher part is more for men or women. So these kind of meaningful questions will come and that you can easily see just in one simple plot. Are you getting what I'm telling now? यस सर। Because you see it here now, just in this plot you can see how this setosa is related to vaginica or vesicular. setosa के काफी कम रेंज पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फर्स्ट क्वार्टाइल टू थर्ड क्वार्टाइल, द रेंज इज स्मॉल। तो सेटोसा जो फ्लावर्स है ये थोड़ा थोड़ा कम्पैक्ट कंपेयर टू वर्जिनिका। देखो, इट्स स्प्रेड लाइक सिमिलरली द वेसिकुलर, इट्स सो मच स्प्रेड। तो lot many things you can derive from here. Fine, so with this I'm stopping.
बट चलो लास्ट एक बोनस प्लॉट जैसा कर लेते हैं काइंड ऑफ नहीं एनीवे वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्लास इफ इट इज देयर एट ऑल और एल्स if I want a histogram I can simply see I can do a histogram of let's say you have told sometime कि histogram starting में कुछ बोला था so I just will do it for you तो I'll take x axis में sepal length and histogram के लिए what will happen in y axis अगर ये बोल दिया होता आई वुड हैव गिवन 1 मार्क टू ऑल इन योर सेक्शन बोल नहीं पाया अभी तक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तुम क्या करो अब ऑफलाइन होता तुमको इतना मार पड़ता वाई Species. हिस्टोग्राम का क्या तुमने ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है हिस्टोग्राम का वाई एक्सिस में कुछ होता है वाई एक्सिस इज नथिंग एक्स एक्सिस इज द लेंथ एंड उसी का ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुम देखते हो हिस्टोग्राम में तो दिस इज योर लेंथ सेपल लेंथ इज फ्रॉम सम लेट्स से 1.1 से लेके कुछ 8 तक है तो इसका कुछ डिवाइड कर दिया तो उसी को फ्रीक्वेंसी बता रहा है तो इसको मैंने अगर चाहूँ तो इसका जो बिन है बिन को मैं छोटा कर दूंगा तो मुझे और बड़े बड़े हिस्टोग्राम दिखेंगे तो वो भी मुझे अच्छा ही लग रहा है तो आई कैन डू समथिंग कॉलर इक्वल टू रेट कर दूंगा तो मुझे जो गैप गैप करके दिखा देगा वो भी अच्छा नहीं लग रहा तो मैं फील इक्वल टू ब्लू कर देता हूँ नहीं फील में कुछ फायदा नहीं होगा कॉलर इज इक्वल टू रेड मैं ये कर सकता हूँ फील इज इक्वल टू समथिंग लेट्स से ब्लू तो ये मुझे ऐसे प्लॉट तो यू कैन डू एनीथिंग एज पर योर विश बट एनीवे वी आर स्टॉपिंग हियर do your own research we'll learn many things when in the DAR course I used to take some 10 classes for this data visualization there